थैंक यू भैया। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। खान सर भैया, और बताइए आप कैसे हैं? क्या दिन कैंसिल काहे लिए भैया? थैंक यू भैया, लाइक डन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ और लोग कमेंट करिए, जितने लोग देख रहे हो भाई सभी लोग कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग कहाँ से हैं। मैं भैया सूरत से हूँ अभी इस समय। अभी इस समय मैं सूरत में हूँ। जी भैया, यूपी से हूँ, लेकिन अभी मैं सूरत में हूँ। आप कहाँ से हो भैया? यूपी से? अच्छा अच्छा भैया, यूपी में कहाँ से हैं आप? अच्छा, बनारस से हैं। अच्छा अच्छा भैया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात भैया। और बाकी घर परिवार के सभी लोग ठीक हैं? कुछ नहीं भैया, मैं ऐसे थोड़ा काम कर रही हूँ। साड़ी में स्टोन लगा रही हूँ भाई। भोजन हो गया भैया आपका?
भोजन हो गया है भैया। अच्छा अच्छा भैया, चलिए बहुत अच्छी बात भैया। भोजन हो गया आपका। भैया मैं आज खाने में खिचड़ी बनाई थी। अच्छा अच्छा भैया, आप भी तहरी खाए हो, चलिए बहुत अच्छी बात भैया। आज शनिवार है भाई, तो मैं शनिवार शनिवार बनाती हूँ। थैंक यू भाई। बाकी और लोग कमेंट करिए भाई। वाचिंग में इतने लोग रहते हो, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। लाइक तो कर दिया करें, सब्सक्राइब। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ भाई, दिल से धन्यवाद करती हूँ आपको। आप जैसे भाई मुझे मिले। सदा सुखी रहो भैया, जहाँ रहो। नहीं नहीं भैया, मैं अकेले नहीं रहती हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, सब हैं मेरे यहाँ। बच्चे बच्चे सब ठीक ठाक है भैया। सॉरी भैया, मैंने पूछ लिया आपसे, पता नहीं। अच्छा अच्छा भैया, कोई बात नहीं भैया, सॉरी, मैंने पूछ लिया जो, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ भाई।
अच्छा अच्छा भैया, नोएडा में आप जॉब करते हैं तो इसका मतलब आप दिल्ली में हैं। क्योंकि नोएडा दिल्ली में ही है तो। यूपी में है। हाँ भैया, लगता है यूपी में है, लेकिन दिल्ली में पड़ता है ना शायद, गुजरात में। हाँ, दिल्ली का बॉर्डर है ना, सही बात है। गाजियाबाद में लगता है, यूपी के दिल्ली के बॉर्डर पे है। हाँ अच्छा। इसके पहले मैं रहती थी भैया वहाँ, और इसके लिए पूछ रही हूँ। मैं यूपी में भैया प्रतापगढ़ से हूँ। जी भैया, कुंडा प्रतापगढ़ है। अच्छा, आप जानते हैं कुंडा प्रतापगढ़, हाँ। लेकिन भैया मेरा राजा भैया के क्षेत्र में नहीं लगता है, प्रमोद तिवारी के क्षेत्र में लगता है प्रतापगढ़ ही। मेरा नाम भैया पूनम है।
अच्छा भैया, 2 लोगों की वाचिंग दिख रही है लेकिन कमेंट एक ही लोग का आ रहा है और लाइक भी 2 है। प्लीज़ आप कमेंट भी करिए जो लाइक किए हों, भाई भाई हो चाहे मेरे बहन हो, आप लाइक कर दीजिए। मेरी प्यारी सिस्टर, मेरे प्यारे ब्रदर जी, आप लाइक किए हैं तो कमेंट भी करिए। और आप वाचिंग में भी दिख रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? आप तो खान सर लिखे हैं, तो आपका यही नाम है कि कुछ और है? अच्छा, ऋषभ नाम है। अच्छा, नाम तो बहुत प्यारा है भैया आपका। थैंक यू भैया। दो बच्चे हैं भैया।
बात तो कर रहे हैं भैया। सामने तो हूँ भाई। अरे बेटी खोल डाउ सब। बाय भैया। जा रहे हो क्या भाई? आप खाना पीना खाए हो कि नहीं? अच्छा खाए हो, बताए। ठीक है भैया। दो लोग वाचिंग में हो भाई, कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करिए प्लीज़। मालती कम्युनिटी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। नेम इज टाइम आपको बात ही करना नहीं आ रहा है। अच्छा दीदी, थैंक यू थैंक यू। क्या करें, आपको बात ही करना नहीं आ रहा है। अच्छा भैया, जो बोल पूछ रहे हैं मैं बता रही हूँ उसको, और क्या बात करूँ। गुड नाइट। वहाँ सोने जा रही थी, देखी आपका लाइव। अच्छा दीदी, हाँ मेरा अभी लाइव चल रहा है दीदी। आप खाना वाना खा ली कि नहीं खाए? एक भाई बोल रहे हैं मुझे आपको बात ही करना नहीं आता। आपके भैया जी आए थे दीदी कि नहीं आए थे, जिसकी वेट में आप इंतज़ार कर रही थी, जिसका जिस चली गई।
अच्छा, आवाजिया बंद रही, सवाजिया नहीं जात रही ना। रूबी अब मामा किए गए हैं, आज कमेंट में तनु नहीं जुड़ी क्या? ना ही रूबी, मामा किए गए हैं, सब ठीक ठाक है। बगलिए मोबाइल चलाए हैं, सुनाता है हम कहे थे कॉपीराइट लग जाए, इबरे आवाजिया बंद कर रहे हैं। सुनाता है तो का? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राम 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 राम। बिट्टी तो सोई हुई है ना। आओ जी, चलो खाना खा ले। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, जा खा ला, 11 बजे। हाँ वही तो कहा थे, 11 बजे यहाँ पे खाना नहीं खाया मुझे लग रहा। ना ही यही बनावे करान, यही से नहीं बंद करे रहे हैं। अब वो सारे एक सारे थोड़ा हम कहे बनाए ले। साड़ी वाड़ी में बहुत मगज मारी रहा था। एक दिन में एक साड़ी नहीं बन पावती है। नहीं वो कमेंट में जो आवा रहे दो चार जने बंद कर दे है। फोन आई गया जो ना फोन आवत रहा तो बंद कर दे, उस तरह उठा ली तो कॉपीराइट लग जाता है। तो एक फिर से चालू करे है। सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा आवाज जाती है बंद। ठीक है, हम म्यूट कर देते हैं। सब ठीक है लक्ष्मी।
तब वो पहले के जैसे नहीं होते। पहले 20-20 लाइक मिल जात रहने।
ठीक है, बाय बाय लक्ष्मी, गुड नाइट। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, जा। जी भैया, कमेंट पढ़ रही हूँ। मैंने खाना खा लिया भैया। सब हाल चाल ठीक है भैया। आवाज़ नहीं। हाँ भैया, अभी तक मैं आवाज़ म्यूट की थी, अब आवाज़ जा रही हो। बगल में मोबाइल चल रही है भाई, इसीलिए म्यूट की थी। कॉपीराइट लग जाएगा। आप खाना बना के खा लिए क्या भैया? हम खाना खा लिए। अच्छा अच्छा भैया, आप खाना खा लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आप खाना खा लिए हैं। और बताओ, बच्चे कैसे हैं आपके? बच्चे मेरे ठीक हैं भैया, बच्चे ठीक हैं, अभी सो रहे हैं सब। अभी मेरी लाइफ चल ही रही है। आप खाना बना भी लिए और खा भी लिए।
मुंबई में कहाँ रहते हो भैया आप? अच्छा अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। मैं पूछ रही हूँ मुंबई में आप कहाँ रहते हो भैया? किस जगह रहते हैं आप मुंबई में? नमस्कार नमस्कार दरोगा भैया, नमस्कार। स्वागत है भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं समझ पाई भैया, ताकि आपको मेरा ये शैम्पू क्या लिखे, इसका मतलब नहीं समझ पाई। और दरोगा भैया सब ठीक ठाक है आपको? लाइक नहीं किए आप? मैं मुंबई में घाट कोपर में रहता हूँ। अच्छे अच्छे भैया, घाट कोपर में रहते हैं। घाट कोपर, कोपर खन्ना। अच्छा, अंधेरी मारोल नाका में काम। अच्छा अच्छा भैया, आप अंधेरी में काम करते हैं? लालचंद भाभी जी प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू भैया, स्वागत है आपका लालचंद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और बताइए भैया आप कैसे हैं? प्रणाम भाई आपको भी, और स्वागत है आपका। तो घाट को ऊपर से तो अंधेरी के लिए उल्टा होगा भैया, कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं आप? क्योंकि अंधेरी उस साइड है, नाला सुपारा की तरफ है, और घाट को ऊपर इधर है। आप भी मुंबई में रहती हो क्या? नहीं भैया, मैं मुंबई में रहती नहीं हूँ, रहती थी मुंबई में, और इधर आ गई हूँ, लेकिन इधर जमता नहीं है, फिर लगता है मुंबई ही जाना पड़ेगा। मैं मुंबई में नाला सुपारा में रहती थी, डीवा में मेरी दीदी हैं। कैसी हो भाभी, खाना पीना क्या लिया? हाँ हाँ भैया, मेरा भोजन हो गया भैया। आप खाना खाए कि नहीं खाए? और आपकी तबीयत कैसी है बताइए? इस समय आप कहाँ रहते? इस समय मैं सूरत में हूँ भैया। लालचंद भैया, आपकी तबीयत कैसी, ठीक है? कैसी है? और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको मेरे लाइव में आने के लिए। तो आपको मेरी लाइव कैसे मिल गई भैया? आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं क्या? घाटकोपर में मेरे परिवार वाले रहते हैं भैया। थाना की तरफ जाओ तो रास्ते में मिलता है ना घाटकोपर, वही है ना?
लालचंद भैया, आपकी तबीयत तबीयत सब ठीक ठाक है? आपका भोजन हो गया? आपको ज्वाइन पहले से किया हो क्या? आपने हमें अनफॉलो किया है क्या? क्या आपको मैं जानता नहीं हूँ क्या? नहीं भैया, अगर ज्वाइन किए होंगे तो कमेंट देख लूँ, करूँ। मैं भी की होंगी लेकिन मुझे तो याद नहीं है। उस दिन तो मैं कई लोगों को जोड़ी थी लेकिन याद नहीं है। आर्यन भाई थे, बलमुआ भैया थे, अभी दरोगा भैया आए थे, ये थे, आप भी थे। मैंने 4-5 लोगों से जुड़ा था, जुड़ी थी मालती भाभी के लाइव में। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मतलब आप भी जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, ये चीज़ मुझे नहीं याद है। और मैं देखूंगी आपको, अगर नहीं जुड़ी होंगी तो जुड़ जाऊंगी। वैसे तो मैं रिप्लाई की थी सबका उस दिन। अगर हमें कोई दिक्कत हो तो आपको है तो मैं लाइव से जा रहा। नहीं भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? मैं मतलब इसीलिए पूछी कि आप डेली मुझे मिलते हो मालती दीदी के लाइव में ना। मेरे लाइव में आप नहीं आते थे, इसके लिए मैं पूछी कि आपको मिला कैसे। तो जल्दी से किसी का लाइव मिलता नहीं है बगैर चैनल सब्सक्राइब किए ना। नाला सुपारा में आप कहाँ पर रहती थी? नाला सुपारा में भैया मैं धानू बाग के पहले गणेश नगर है, मैं उधर रहती थी, श्री राम नगर के पास में। यूपी नाका मालूम है, पार्वती होटल के पास में हमारे गांव वाले हैं, वहाँ पर नाला सुपारा में भैया। लालचंद भैया, आपका भोजन हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी भैया जो मैंने आपसे पूछ लिया। और मैं इसीलिए पूछी थी जो है कि मतलब लाइव में बहुत सारे लोग आते हैं दीदी की लाइव में, लेकिन मेरे लाइव में नहीं आते थे, तो मैंने सोचा आपको कैसे मिल गया। यूपी नाका मालूम है, पार्वती होटल के पास। यूपी नाका नाला सुपारा में है क्या भैया? आप बताइए लालचंद भैया, अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरी मालती बहन और संजू निषाद बहन सभी लोग सुमित्रा भाभी के अभी लाइव में था, उसके बाद मैं आपका लाइव में आया हूँ। अच्छा अच्छा भैया, तो मालती भाभी के लाइव में तो मैं मालती दीदी के लाइव में तो आपको मैं देखी थी। बाकी तो और मैं किसी के लाइव में भी ज्वाइन नहीं हुई हूँ, क्योंकि सुमित्रा भाभी जो बोल रहे हैं ना, अभी हम वो लोग मेरे से नहीं जुड़ी हैं। अभी जितने लोगों को जोड़ी हूँ उनके लाइव में मैं जाती हूँ, और जो लोग नहीं जुड़े हैं मैं नहीं जा पाती हूँ। ओ बाप रे बाप रे। तो आप लाइव चलाते हो क्या भैया? सॉरी भैया, अगर नहीं चलाते होंगे, चैनल नहीं होगा तो बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। धानूबाग वसई फाटा रोड ऑफिस के पास है ना? हाँ हाँ भैया, हाँ सही बता रहे हो, वसई फाटा के पास है धानूबाग। तो धानूबाग से थोड़ा पहले है गणेश नगर। अरे थोड़ा पहले नहीं, बस इसे बगल बगल में है। चलिए कोई बात नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो मेरे लिए इतना मेरे ख्याल रखे और मेरे लाइव में आए भैया। दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई आपको। और आप भी लाइव आते हो तो बताइए भैया, लालचंद भैया, मैं ज़रूर आऊँगी आपकी लाइव में। जूही चंद के बगल में ही तो है ना? जी भैया जी। दरोगा भैया, दरोगा भैया चले गए कि दरोगा भैया लाइव में? नहीं भैया, दरोगा भैया चले गए हैं। कमेंट करें, आपको मैं कहा था सुमित्रा भाभी के लाइव में आने के लिए। मानती बहन, सुनीता बहन, मोहिनी सब लोग आए थे लेकिन आप ना। हाँ भैया, मैं अभी मालती भाभी अकेले से जुड़ पाई हूँ तो उनके लाइव में जाती हूँ। बाकी आप जिसको बता रहे हैं
मैं इन लोगों में से किसी लाइव में ना मोहिनी की लाइव में जाती हूँ ना सुनीता की लाइव में जाती हूँ, अभी इन लोगों से नहीं जुड़ी हूँ मैं। तो मेरा नाम लेकर के सुमित्रा जी आईडी का नाम बजे आएंगे, जुड़ जाना, आपकी भी सपोर्ट करेगी और आप उनका सपोर्ट करना। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है सुमित्रा जी की आईडी से कितने 1 बजे दिन में ना? ठीक, ओ सॉरी, 1 बजे ठीक है भैया, मैं 1:30 बजे चलाती हूँ, 1 बजे मेरे पास टाइम रहेगा, आधा घंटे के लिए मैं जुड़ जाऊँगी। और सुमित्रा जी का चैनल क्या है आप इसी में बता दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और मैं जुड़ जाऊँगी उनसे। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ भैया, उनका चैनल आप बताइए। अच्छा अच्छा भैया, चलिए ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चूँकि उस तरह भूल जाती हूँ, अभी ये रहेगा तो इसमें से देख लूँगी। ठीक है भाभी। प्रवीण भैया आप चले गए हो क्या? शायद पंकज भाई भी जाते हैं कि नहीं जाते तो नहीं मालूम है। और भाभी जी मैं जा रहा हूँ, अब हमको कल ऑफिस में जाना है, थोड़ा सा काम मेरा बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल भैया जाइए, चूँकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, अभी 11:15 बजने वाले हैं। बिल्कुल जाइए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको इतना सपोर्ट करने के लिए। और बहुत सपोर्ट हो जाता है आप लोगों का भैया, बस ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। 1 बजे दिन में आती हैं और 1 बजे रात को आती हैं। आईडी का नाम है सुमित्रा जी डांसर। ओके ओके भैया, सुमित्रा जी डांसर, ठीक है। 1 बजे रात को तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन 1 बजे दिन में जुड़ूंगी उनसे, उसको पूरा करना है भाभी। बिल्कुल बिल्कुल भैया जाइए, पूरा कर लीजिए भैया। बहुत धन्यवाद आपको इतना सपोर्ट करने के लिए भैया। आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई लोग। आप हमको अब जाने की आज्ञा दे दीजिए, बहुत अच्छा। बिल्कुल भैया जाइए, मैं बोल रही हूँ जाइए भैया, बहुत आपने मेरा मदद किया, मेरा सपोर्ट बहुत किया। बिल्कुल भैया जाइए। बिल्कुल भैया जाइए। राधे राधे, जय श्री राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको। मेरा नाम लेकर बोलना सुमित्रा जी, मालती बहन को की आईडी मालूम हो गया है, सीमा बहन भी थी, इन लोगों को पता हो गया है।
के हो तो इन लोगों से मालूम कर ले। हाँ हाँ भैया सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मालती भाभी भी बहुत जानकारी देती हैं जो उनको मालूम रहता है। पंकज भी जाते हैं। अच्छा अच्छा, पंकज भैया जाते हैं। पंकज भैया तो हम लोग से जुड़े हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं। कल सुबह कितने बजे? भैया सुबह का मेरा कोई टाइम नहीं रहता है। वो तो सुबह मैं काम करती हूँ तो चालू कर देती हूँ। वैसे तो 5 बजे मैं आ जाती हूँ, कभी कभी आँख खुल जाती है तो 4 बजे भी आ जाती हूँ। नहीं तो 5 सवा 5 बजे मैं चालू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना रहता है। तो इसके लिए उठ जाती हूँ और लाइव चालू कर देती हूँ, तो नींद नहीं आता है। नहीं तो मेरे को नींद आती है, इसीलिए मैं और लाइव चालू करती हूँ। पंकज भी जाते हैं जीआरडी करके, और ज़्यादा से ज़्यादा भी मालूम है मालती बहन की। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। मैं मालती दीदी के लाइव में तो डेली जाती हूँ। और कल तो मैं मालती दीदी के लाइव में पूरा पूरा 1 घंटे 10 मिनट रही थी। शुरू से लेके लास्ट तक मैं जुड़ी थी, क्योंकि कल उनकी लाइव, कल नहीं है परसों थी शायद, बहुत अच्छी लगी थी उनकी लाइव। आज तो मैं आपको सुबह 7 बजे तक देख रहा था ना भाभी। हाँ भैया, तो सुबह मैं जितने बजे उठ जाती हूँ उतने बजे से चालू करती हूँ, तो 7 साढ़े 7 बजे बंद करती हूँ। जब तक मैं काम करती हूँ तब तक चालू रहता है। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो बंद करके चली जाती हूँ। तो वही तो बोल रही हूँ ना कि अगर जग जाती हूँ तो 4 बजे भी लाइव आ जाती हूँ, नहीं तो 5 बजे तो निश्चित है मैं जग जाती हूँ। 5 साढ़े 5 बजे तक तो लाइव चालू कर देती हूँ, वैसे काम भी करती रहती हूँ। जब सरला भाभी जी आपसे बात कर रही थी तब उसी समय पर मैं भी आ गई। हाँ भैया, आप ही को देखी थी तो मुझे तो नहीं मालूम था। सरला दीदी ने बताया कि मेरे देवर सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो मुझे पता चला कि आप उनके देवर हैं, नहीं तो मुझे क्या मालूम होता। आप सुबह जल्दी उठ जाते हो क्या भाई? हमें लगता है तभी तो लाइव में आ गए थे। लालचंद भैया आप चले गए क्या? जाना तो भैया बता के जाना। हम तो सुबह में 6 बजे तक उठ जाते हैं। अच्छा अच्छा भैया, 6 बजे तक उठते हैं। हाँ तो उसी 6 के लगभग में आप जुड़े भी थे ना मेरे से। और मैं बैक कैमरा करके काम कर रही थी। जब सरला दीदी आई तब मैंने फ्रंट कैमरा किया, नहीं तो फिर मैं बैक कैमरा की थी पहले। सुमित्रा जी की लाइव में कल आप ज़रूर जाना। पंडित भी मिलेगी। जी भैया जाऊंगी। और पहले उनकी 1 बजे की लाइव रहेगी तो फिर उनके लाइव में जाऊंगी, उसके बाद फिर मालती भाभी का 4:30 बजे रहता है, फिर मालती भाभी के लाइव में जाऊंगी। अभी देखूंगी जो है उनका वीडियो मिलेगा तो उनके वीडियो पे मैं कमेंट करूंगी।
सर्च करूँगी, ढूंढूंगी भैया। मालती बहन की लाइव में मैं भी 4:30 बजे आऊँगा, लेकिन 1 बजे उनकी लाइव में ज़रूर जाना है। आप मेरी बात को मानना और मेरा नाम लेकर कमेंट करना। ठीक है भैया, आपका नाम लेकर कमेंट करूँगी। आप रहेंगे तो ज़रूर आइएगा। चलो ठीक है भाभी जी, मैं अब जा रहा हूँ। बाय बाय। बाय बाय भैया, बाय बाय। थैंक यू भैया इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड नाइट, बाय बाय। राधे राधे भैया, शुभ रात्रि आपको। ठीक है लालचंद भैया, जो आप मुझे बता रहे हैं मैं ज़रूर करूँगी। सदा सुहागन रहो, हंसते रहो, हंसते हंसते रहो, यही दुआ है मेरी भाभी जी आपको। थैंक यू भैया, हमेशा आपकी दुआ मेरे साथ रहे भाई। मैं भी यही चाहती हूँ भैया, आप लोग सदा खुश रहिए जहाँ रहिए मेरे प्यारे भाई लोग। आपका साथ वीडियो को मैं कमेंट कर दिया हूँ और देख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं देखूँगी और ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगी सुबह में। मैं ऐसा नहीं है, मैं करूँगी, आप भी देख लीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय टू यू भाभी, आपको भी गुड नाइट भैया, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू भैया। अभी तो मुझे 1 घंटे जगना है, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। 12 बज रहा है, 1 बजे तक जगना है बस भाई। ओ बेटा, छोड़ इसको। चलता हूँ भाभी जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट भैया, शुभ रात्रि, बाय बाय। थैंक यू भैया इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई, और आपकी बात ज़रूर याद रखूँगी भैया। खुश रहो भैया जहाँ रहो, हंसते मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए आप। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे भाई, बस यही कामना करती हूँ। आप लोग का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे बस। आप लोग मेरे बड़े भाई हैं भैया, समझ लीजिए।
खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। वे ग्वाले वालों कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब गया है। न तन पर है धोती, न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है धोती, मिलने सुदामा गरीब गया है। न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है धोती, मिलने सुदामा गरीब गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब गया है। जाना है हमका। मेरे भाई जाए समझ लेके सपने में जाके रहता।
की बहिणी थी अवतारम की बहिणी कन्हैया कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरिगौरं करुणावतारं फलनेकवहिनीकलैगसियारम्
गुड नाइट भैया, गुड नाइट, गुड नाइट भैया। जिण तीर रही